फर्स्ट आमचे दोघे आमदार प्रेसिडेंट अमित पालेकर जिल्हा पंचायत मेंबर सगळे रेडी रावचे एमएलए सिद्धेश आता 1 2 3 दक्षिण गोंयच्या सगळ्या कार्यकर्ते खातीर तयार केले दक्षिण गोंयचे आम आदमी पक्षाचे कार्यालय सुरू झाले आसा। आता सामायिक प्रोजेक्ट करून आता रितसर एक उद्घाटन सोहळा तयार करतात। मॅडम दिशी मॅडम आता सामायिक प्रोजेक्ट करतले तसेच आमदार वेन्सी वेगस आमदार क्रुज सिल्वा प्रेसिडेंट अमित पालेकर क्रुज सिल्वा एमएलए क्रुज सिल्वा दोन ओके कैप्टन वेन्सी एमएलए कैप्टन वेन्सी वेगस प्रेसिडेंट वाल्मीकि दर्शन कम टू मिराकी प्रेसिडेंट एडवोकेट अमित पालेकर आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर जोसेफ जिल्हा पंचायत मेंबर जोसेफ वाल्मीकि सुरेल तिलवे जनरल सेक्रेटरी सुरेल तिलवे यो वाल्मीकि यो जसन यो आता रितसर उद्घाटन झाले असा। We have amongst us leader of opposition, former CM of Delhi, Atishi ma'am, and no other person could actually come and grace this occasion to open our South Goa office. I think every one of us knows that Aam Aadmi Party is here to bring in the difference. आमी तो बदल म्हणटा पळय तो गोंयांत कसो हाडपाक जाय तो बदल हाडपाक आमचे आज दोन आमदार जे आसा बाब इंजिनियर क्रुज सिल्वा आनी बाब कॅप्टन वेन्सी वेगस आनी ताचे बरोबर आतां ताका साथ दिवपाक आमचे जोसेफ पिमेंता बाब जे झेडपी मेंबर आसा ते जाल्यार आनी आमची बाकीची हांगा टीम जी आसा ती सगळी जी हांगा प्रेजेंट आसा तांच्या हार्ड वर्कांतल्यान आज हे सावथ गोंयच्या ऑफिसांत आमी इनॉग्रेट केला। आनी तुमचे कडेन उलोवपा खातीर हांव मागता दिस इज अ प्रेस ब्रीफिंग आफ्टर दैट वील एड्रेस ऑल आवर वॉलंटियर्स हू आर प्रेजेंट आउट हियर करेक्ट सो आई रिक्वेस्ट मैम टू एड्रेस द मीडिया। यहाँ पर आए सभी मीडिया के साथियों को नमस्कार। आज हम यहाँ पे आम आदमी पार्टी के साउथ गोवा ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गोवा आकर हमेशा गोवा के लोगों से हमें बहुत प्यार मिला है और गोवा के लोगों ने हम पर बहुत भरोसा दिखाया है, तो हमेशा गोवा आकर बहुत अच्छा लगता है। और आज यहाँ पे साउथ गोवा के ऑफिस का हम उद्घाटन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब आने वाले ज़िला परिषद इलेक्शन, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन और उसके बाद 2027 में होने वाले असेंबली इलेक्शन की ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रही है। गोवा के लोगों ने 2022 के इलेक्शन में हम पर भरोसा दिखाया। हमारे दो MLAs क्रूज डिसिल्वा जी, वेन्सी वेगस जी को जिता के भेजा। अभी रिसेंटली ZP इलेक्शन में जोसेफ पिमेंटो जी को जिता के भेजा। आम आदमी पार्टी के MLAs ने वो करके दिखाया है जो शायद आज तक गोवा के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जब आम आदमी पार्टी के दो MLAs जीत के आए थे, गोवा के और गोवा के बाहर के सारे पॉलिटिकल पंडित हमें ये कहते थे कि 1 महीने की बात है, 2 महीने की बात है, 2 MLAs किसी पार्टी में नहीं टिकते हैं गोवा में। वो पार्टी छोड़ के, आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले जाएंगे। लेकिन
आम आदमी पार्टी के हमारे एमएलएज ने ये दिखा दिया कि वो पावर से पैसा और पैसे सिर्फ पावर के लिए नहीं आए हैं, वो लोगों के लिए काम करने आए हैं। उसी समय 2022 के इलेक्शन में कांग्रेस के 11 एमएलएज जीत के आए, लेकिन उस 11 में से 8 एमएलएज बीजेपी में चले गए। आज कांग्रेस में सिर्फ 3 एमएलएज रह गए। और ये गोवा के इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा। बार बार कांग्रेस ने गोवा के लोगों को धोखा दिया है। गोवा के लोग कांग्रेस के एमएलएज को जिता के भेजते हैं और वो बीजेपी में चले जाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के एमएलएज ना सिर्फ आम आदमी पार्टी में रहे, बल्कि पिछले 3 साल से लगातार अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और गोवा की लोगों की आवाज गोवा की असेंबली में उठा रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं कि गोवा की राजनीति में क्या हो रहा है। गोवा के ही एक एक्स बीजेपी के मिनिस्टर जब बीएल संतोष जी से मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं कि गोवा में करप्शन नहीं है, गोवा में लूट चल रही है, लूट। उन्होंने खुद कहा कि मैंने 20 लाख 15-20 लाख उन्होंने खुद कहा कि मैंने 15-20 लाख रुपए दिए हैं अपना काम करवाने के लिए। तो अगर एक एक्स मिनिस्टर को काम करवाने के लिए इतना ज्यादा करप्शन फेस करना पड़ रहा है तो एक आम इंसान का क्या होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ बीजेपी अपनी जेब भरने में लगी हुई है तभी यहाँ के लोगों को अच्छे स्कूल नहीं मिलते, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम नहीं मिलता। और आम आदमी पार्टी गोवा के लोगों के साथ हमेशा खड़ी रही है और जैसे गोवा के लोगों ने हम पर 2022 में भरोसा दिखाया, अब 2027 के इलेक्शन की तैयारी आम आदमी पार्टी शुरू कर रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी का प्रेजेंस और परफॉर्मेंस बेटर होगा और गोवा के लोग हमें और भी ज्यादा सीट्स जिता के आने वाले इलेक्शन में भेजेंगे। थैंक यू। Ma'am, what about the elections? You said we are preparing for elections. After the Delhi elections, Amit sir said that alliance with Congress is the only way forward. What about 27 elections? Are we going to go solo or fight elections? We are preparing to fight solo for the upcoming ZP elections, the municipality elections, and the 2027 assembly elections. So you are saying there will be no alliance with Congress Yes, in 27? there will be no alliance. Aam Aadmi Party will be fighting on its own. Will there be some room, because 2 years is a long time in politics, or we have taken a call? As of now, Aam Aadmi Party has decided that we are going to contest all 3 elections, the Zilla Parishad elections, the municipal elections, and the assembly elections on our own. Why no alliance? Is there a Well, reasoning? it is very arithmetic? clear that Congress cannot be trusted. Last time, 11 MLAs from the Congress won. 8 of them have gone into the BJP, only 3 are left. And this is not the first time. In the previous government also, almost 80% of MLAs, last time also I think there are only 3 MLAs left. 1 MLA left. All of them went into the BJP. So how can the Congress party or their leadership or their MLAs even be trusted with an alliance when Congress MLAs after winning elections go into the BJP? Aam Aadmi Party had rallied behind the South Goa Member of Parliament, Captain Vijay Yadav, and it was an alliance part. So is that going to be a factor to be considered before you all? Now, as I said, Aam Aadmi Party has decided that we are in the ZP election, the municipality elections, and the assembly elections, be fighting on our own. What goes wrong in Delhi assembly election? In Delhi assembly elections, there were multiple factors. If you were to see in not just the 1 month of the elections, but for the past 3 years, the kind of attack faced by Aam Aadmi Party has never been seen in the history of this democracy before. All Aam Aadmi Party leaders were arrested and put into jail for long periods of time. All work of the government was brought to a standstill by the central government, their lieutenant governor, the bureaucracy, and the GNCTD Amendment Act. Even during the elections, there was full misuse of the electoral machinery of the police, which is in the hands of the BJP-led central government, of the election commission that manipulated electoral rolls, of open intimidation of the voters by goons belonging to the BJP with full support from the police in Delhi.
And yet, despite all of this, Aam Aadmi Party got 43% votes and BJP got 45% votes. So it is very clear that despite all efforts by the BJP, a very large number of the people of Delhi have still reposed their faith in Aam Aadmi Party. And I think that as the opposition in Delhi, it is now our responsibility to represent the 43% of the voters and hold the BJP government responsible for the promises they have made. इन दिनों में अरविंद केजरीवाल सामने नहीं आ रहे, क्या कहाँ पे है, किससे बात हो रही है? अरविंद केजरीवाल जी विपश्यना के लिए गए। तो इन दिनों में किससे बात कर रहे हैं, किससे कांटेक्ट? विपश्यना के दौरान आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप साइलेंट मेडिटेशन। 2025 और दा मार्च म्हणतो आम आदमी पार्टी सांग लकी और दीस कित्याक 3 वर्स पयलीं 10 मार्च 2022 आमचे गोंयच्या लोकांनी आमकां आम आदमी पार्टीक 2 MLA दिल्ले आयचे दिसा. सो आयज 3 वर्सां. सो म्हज्यान म्हणपा जाता 10 मार्च आमकां लकी. आयज इनॉग्रेशन बाय कोइन्सिडंट म्हाका दिसता हें इनॉग्रेशन आयज 10 मार्च पडलां. कित्याक हें इनॉग्रेशन जावपा आसलें फाटीं डेट पासून फिक्स जाली, 2 पार्टी मिस जावन लकीली आयज 10 मार्च पडलें. सो आमचो म्हाका दिसता देवान हो आमकां दीस दिलो आम आदमी पार्टीक. सो म्हज्यान खात्रीन म्हणपा जाता 10 मार्च 2027 आमी आमचो गव्हर्मेंट करतले. देव बरी सांज दिव सगळ्यांक. गुड इवनिंग एवरीवन. म्हाका सदां अरविंद केजरीवाल सदांच स्लोगन घालून आपल्यागे भाशण कमेस करतालो. आय थिंक अतिशीगे परमिशन घेवन हांव आज अरविंद केजरीवालागे आमी स्लोगन घेवन तेजी याद करता आसतना आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी. मातशे राजबारा आशिल्ले आमचे सगळ्यांचे वळखीचे आवडीचे दिल्लीचे एक्स चीफ मिनिस्टर तशेंच प्रेजेंट लिडर ऑफ ऑपोजिशन मॅडम अतिशी, आमचो गोंयचो आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट एडवोकेट अमित, आमचो इंजिनियर क्रूज, मुगेलो कलीग आमदार वेली कॉन्स्टिट्युन्सीचो, आनी आमचो बाब जोझफ ZP बाणाले कॉन्स्टिट्युन्सीचो, तसोच सगळे हांगा आम आदमी पार्टीचे लिडर्स, व्हॉलंटियर्स, कोऑर्डिनेटर्स आनी सगळे मुगेले आयकोत ते गोंयचे भाव भयणानो. आज 10 तारीख जे भाशेन क्रुजान सांगिलां 3 वर्स जाली आमी जुरामेंत गेल्लो की तुमगे जो वोट तुम आमकां मारलो ते वोटाचेर आमी विश्वासी रावतले, आम आदमी पार्टी बारा रावतले आनी हो झाड घेवन हो कचरो जो आहा तो कचरो साफ करपाचें जे काम तुमकां दिलां ते काम आमी तुमगेले उतरा प्रमाण करतले. आनी आज 3 वर्स जाली आमी ही क्रेडिबिलिटी घेवन हे काम करीत आहाय. आम दुसरे पार्टी भाशेन BJPक टँक दिल ना, खुचे पार्टीक टँक दिल ना. आनी म्हाका सदां आज गोंयकारांक सगळ्यांक एक उलो, जे भाशेन आमी 3 वर्सां काडलें उरलें ती 2 वर्स काडले. आज हे साऊथ गोवा जे ऑफिसां घडून काडलां हे फकत दाखोवपाक गोंयकारांक की आज तुमी जो आमचेर विश्वास दवरला आम तो विश्वासाचो घात केलो ना, आम तसेच आहाय. आमको कडेन तुमकां व्हडले ब्रिज बांदून दिवपा जालें ना ऑपोजिशनाक रावन, पूण ऑपोजिशनाक रावन दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे डेव्हलपमेंट जे आहा ते आमी हुंयच कमी दवरले ना. जावं क्रुजान जावं हांवें सगळे रस्ते जावं लायट्यो जावं हे आम काम करून दाखयलो आहा. सो मेसेज इज व्हेरी क्लियर. इंटेन्शन जरी तर आसतलें जाल्यार ऑपोजिशन जावं रुलींग जावं काम करून दाखोवपा जाता. पूण गरजे म्हणटाय तें लोकांन जो वोट मारलो ते वोटाचे उतराचे आहाय, ते वोटाचे उतराचे उरतले आमगे टर्माक. आनी मुखावयल टर्म तुमचे भाशेन 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी दिल्याय त्यो म्हाका सदां डबल आनी ट्रिपल करून आमकां मेजॉरिटी दिवन 10 तारखे मार्चाचे 2027 आमकां एक चान्स दिवपाची गरज आहा. हांव आज सगळे गोंयच्या लोकां कडेन मागता आमकां एक चान्स दियाय. जे भाशेन बाणालकारांनी आनी वेर्ळेकारांनी आम दोगांयकूय 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी काम करपा चान्स दिला. आख्या गोंयच्या लोकां कडेन मागता आमकां एक चान्स दियाय, आमकां एक पाट गव्हर्मेंट फॉर्म करपा दियाय आनी मागीर डिसिजन घेयाय की आमी चोताय
आम उडी माताय, आम गोंयकारांक फोटयताय, आम फोटोय आनी फोटिंगपणाचे बेसिसाचेर चलताय, यार आमी आम आहाय ते भाशेनूच चलताय. आज प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन गोंयकारांनी याद दवरूंक जाय 2017 कितें जाल्लें गोंयांत, 2019 कितें युटर्न जाल्लो गोंयांत, 2022 तुम कोणा निवडून हाडले. आज जमीन विकूत वयताय, ना हांवें ना म्हूण क्रुजान आमगे एक शेत पुरयल ना म्हूण आमगे कन्वर्जनाक घायल ना. आमी हे पॉलिसीज जे सरकारागे आहाय ते पॉलिसीजाचे आम एगेन्स्ट आहाय. आम हे पॉलिसीजांक निषेध कोताय असेंब्लीन. तशेंच वी वॉक द टॉक. आमगे शेत पुरयनाय, आमगे कांयच इलिगल कोनाय, आनी वी आर प्राउड that we are still today not using any of the policies which are challenged by Goa and Goans at large. आज जो लीडर फोटिंगपणान वोट मारून लोकांक फोटिंगपणान आपल्यागे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जिखोवन येयल्लो आहा, ती लिडरशीप चेंज करपाची गरज आहा. आनी ती लिडरशीप चेंज करपाक ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन आम आदमी पार्टी गेलो व्हॉलिंटियर काम करतलो. आम आदमी पार्टी गेलो व्हॉलिंटियर न्यू फेसीस सोदून हाडटलो, आनी ते फेसीसांक तुमी तेंको दिवन आमी एक गव्हर्नन्स मॉडेल जो आज म्हणाल्यांत आनी वेळ्ळ्यांत जो आमी दाखोवन दिल्लो आहा, तोच गव्हर्नन्स मॉडेल गोंयभर दिवपाक आमकां उमेद आहा. आमगे उमेदीक तुमगेलो तेंको जायो, दितली की नाय? आज जे भाशेन एक उमेद भोगता, म्हाका सुमार 9 वर्स मायज जाली हे पार्टेक आयिल्ल्यान. जायते चोयले आमी ही पार्टेंतल्यान, जायते चोयले. आमगे लिडरां भितर गायले, आमकां पयशा ऑफर येयल्यो, आमकां मिनिस्ट्री ऑफर येयल्यो, टॅक मिनिस्ट्री ऑफर येयली. हें सगलें सायडीन धरून सर जेली आसतना, सगळे मिनिस्टर आमगे जेली आसतना आमी हें आज दाखोवन दिलां की पयशांची आस म्हणटाय ती सगल्यांकूच आसता. बट लोकां गेलो वोट. आज जो जितलो गोंयकार आज आमकां आयकता, तेमी फकत एकूच चिंतपा जाय, डांबोर घालून कोणूय दितलो, लायट घालून कोणूय दितलो, सगळी काम कोणूय आमदार करून दितलो. ने आमदाराक 10 म्हयने लागत, पन्ने आमदाराक 1 म्हयनो लागत. पूण इंटेन्शन जे आहा गोंय राखपाचें आनी गोंयची बाट इंकना जावपाची, ते आम दोगांयन दाखोवन दिल्याक हें आम खूंय गेलें नाय. आनी हेंच जर तर जाय जाल्यार आमच्यांनी एकूच विश्वासान सांगूं जाता की वी आर हियर as the only credible alternate source for Goa. तुमक जोरी तरी जायें जाल्यार आमकां एक चान्स दियाय. आम वावर करपाक रेडी आहाय. आमकोडे लोक जायत अडकना जातलो. आमको जोडी वोट आसलोलो भुरगीं नाय आसतले, पूण ने भुरग्याक वितून हाडय. जे भाशेन म्हाका चान्स दिल्लो पाटेन, तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांकूय चान्स दितले. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक न्यू फेसीक चान्स दिया आमी. तेंक तुम सांबाळाय, तुम वोट कराय. तुमगे शेजऱ्यांक, तुमगे फ्रेंडांक, तुमगे फॅमिलीक सगल्यांक सांगाय हे पार्टी आम आदमी पार्टीक निवडून हाडया. हे पार्टी आम आदमी पार्टी गेले आनी मेंबर जॉईन करया आनी तेंका एक चान्स दिवन गोंय सुदारपाक जाता जाल्यार एक चान्स दिवपाक चोया. हें सांगून सगल्यांक तुमी हांगा आयले म्हणून देव बरो करूं आनी थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. आमची थोडे हांगा आता थोडे थंय रावल्या. देर आर सम हू आर बिहायंड द व्हॉलंटियर्स, देर आर सम हू आर अंडर द शटर, बट देर आर सम हू आर हियर. हे सगळे जे गोंयांत काम चलयलां तातूंत भितर एक टीम वर्क आसता, आनी दॅट इज वॉट आम आदमी पार्टी इज. एंड कोर स्ट्रेंथ इज आर व्हॉलंटियर्स हू आर प्रेझेंट हियर टुडे, रायट फ्रॉम बॅक बिहायंड टू हियर. हांव मॅम सांगलें की आमी व्हडलें पब्लीक फंक्शन करना, आमचे कडेन तसो पयसोय ना, पूण आमचे कडेन कापासदाद आसलेले व्हॉलंटियर्स आसा आनी ते तुमी हांगा आसा. म्हणून आज जेन्ना आमी हें ऑफीस 10 दिसान रेडी केलां, बाब जसन, आमचो प्रशांत आनी क्रूज आनी बाकीचे आमचे जे व्हॉलंटियर्स आसा इन्क्लुडींग आर वेन्झी आनी मेळून 10 दिसान हें ऑफीस उबें केलां. सो दीस इज वॉट आम आदमी पार्टी इज ऑल अबाउट. आतां आमकां म्हायती मेळ्ळा की एक नवो सिंबल रेडी आहा इलेक्शन कमिशना कडेन मागला म्हणून. देर इज गोइंग टू बी न्यू सिंबल फॉर वन पॉलिटिकल पार्टी इन गोवा. हातान कमळ. You know what I meant to say? Yes. Atan Kamal is a new symbol for Goa for re-election of the 43 who are going to claim, 33 who are going to claim for election. Atan Kamal. हे जावपाक दिवपाक जाय. ज्या आज अशी परिस्थिती आसा की गोंयांत बीजेपीन देवाकूय सोडलो ना. दूख दिसता ह्या गोष्टीचे की देवाकूय सोडलो ना. लोकांक खाल्ले ते खाल्लेच. कमिशन, म्हारगाय ते डिफरंट लेवलाक पावलात. आज करप्शन अशा लेवलाक पावला की आमकां
जिणे नाका जाला. आनी जेन्ना मॅम अतिशीन सांगलें तशें एक मिनिस्टर एक्स मिनिस्टर जेन्ना भायर येवन सांगता की आपल्याक बारीकशें काम करतलें जाल्यार 20 लाख दिवचे पडले. रुटीन वर्क म्हणलें ताणें, याद आहा तुमकां ती रुटीन वर्क. आनी प्रत्येक गोंयकाराक जो सादें म्युटेशन करपाक वता पळय ताका खबर आसतलें गोंयांत कितें चल्लां पळय तें चेंज करतलो आनी बदल हाडटलो जाल्यार आम आदमी पार्टीची गरज आसा. वायट दिसता ह्या गोश्टीचें की आमदारांक सांगचें पडटा की आमी रावले ऑनेस्टली हांगा म्हणून, बाकीचे पळोवन गेले म्हणून. पूण ही परिस्थिती हाडली कोणी गोंयाचेर? जर जाल्यार हातान कमळान कमळ हातान कमळ अशी परिस्थिती जी जाली ती गोंयकाराचो जो स्वाभिमान आसा तो खंय तरी विकूनच आज सरकार घडटात. आनी ते जर बदलतले जाल्यार आम आदमी पार्टीचो बदल घेवन हाडपाक सोदता. जो बदल हांगाच्यान येतलो ताची सुरवात जी गोंयांत 2022 2 आमदारांच्या निमतान जाल्ली ती 2चे 22 करपाची जबाबदारी तुमची आमची सगळ्यांची आसा इन 2027. आज फेसबुकार फोटो आयलो अचानक, म्हाका याद आसा जेन्ना तांचो रिजल्ट जाल्लो, आमी वांगडा आशिल्लीं आनी तो फोटो आज पॉपअप जालो सेईंग दॅट मेमरीज म्हणून. आनी को इन्सिडंट आज जशें क्रोज बाबान म्हणलें ते this was supposed to be on 1st, but because of certain reason ma'am could not reach on 1st, so we decided to have it on 10th. And what a coincidence, and this is the same coincidence that is going to be followed in on 10th March 2027 for sure, where 2चे 22 जातले. कारण दोन्ही आमचे जे आमदार आसा तांणी ओपोजिशनान रावन जे केला ते खंयच्याच आज कितल्योय स्पिरिच्युअल यात्रा कर, हे कर, ते कर, बट दे कॅनॉट डू वॉट आर MLAs आर डुईंग. एकल्यान बाब क्रुजान नियरली 10 लाख प्लस स्क्वेअर मीटर जमीन आज गोंयान कन्वर्जन चलता. तुमच्यो जमनी आज कन्वर्ट जावन कमर्शियल C1, C2, C3, C4 सीच चुकल्या. S1, S2, S2 बी आहले ते C, B कितें आसा ते ना, संवसारांतले सगळे काडून TCPन घातला. आनी लँड कन्वर्ट करता आसतना आमचो आमदार working with community has converted or brought 10 lakh plus square meters of land under agriculture. As ma'am has had lunch with the same rice, and she's surprised that why this is not going into India. I said no, this is going abroad right now. We'll slowly get it to Delhi and other places because Goy वाट दाखयतले, आमचे आमदार वाट दाखयतलो. We are talking about आमचे वेंजी बाबान फ्री क्लिनिक स्टार्ट केले, फ्री क्लिनिक ऑन हिज ओन. आज बेनावलीचो खंयचोय मनीस जर कॅटरेक्ट ऑपरेशन करपा जाय किंवा आय कॅम्प करपा जाय किंवा मेडिकल जाय, ही कॅन वॉक इन फ्री इन टू हिज क्लिनिक अँड गेट दॅट मेडिकल. अँड ही हॅज पेव्ड द वे फॉर आज जर हेल्थ मिनिस्टर कॅम्प करता गोंयभर जाल्यार आय थिंक वी हॅव शोन दॅट वे, नॉट दिल्ली, नॉट एनीबडी एल्स बट आवर आमदार. And that clap is for you, Venzi, and that was for you also. काल जेन्ना आमचो लिंकन बाब फ्लॅग लावपाक गेलो आमचे इन मारगांव, 4 जाण आयले BJPचे मनीस. आमकां दिल्ली पार्टी नाका म्हणपाक लागले, आमकां दिगंबरूच जाय, आमकां BJPच जाय. दिल्लीची पार्टी नाका म्हणपाक, अरे तुमी जो मॉडेल आज आमचो कॉपी करता आनी गोवा मॉडेल म्हणून जो आज फुडें सरता तातल्यान जर तुमचो सरकार शिकता जाल्यार आमचे कडल्यान शिकात. आमचे दोन्ही आमदार तुमकां शिकयतले. आमची मॅडम अतिशी तुमकां शिकयतली स्कुलां कशी बरी करप. आमची मॅडम अतिशी तुमकां शिकयतली मोहल्ला क्लिनीक कशें स्टार्ट करप गोंयभर आनी हेल्थ गोंयभर कशें व्हरप. आमी लँड कन्वर्जन करिना, वी ब्रिंग लँड अंडर इरिगेशन and that is the party with a difference, and you are our core strength. So congratulations to all of you on the opening of this space. This space is not just Aam Aadmi Party's office. हे फकत आम आदमी पार्टीचे ऑफिस म्हणून चिंतनाका. तुमचे विचार आसा ते हांगा घेवन येयात, तुमचे जे म्हणणे आसा ते हांगा घेवन येयात. And it will be the duty and we will perform it to the best of our ability through our MLAs to bring those visions, to bring those thoughts, to bring those suggestions to the government and take it to the government to bring it to reality. And ते करतलो जाल्यार आयज आमी सरकारान नासू पूण ते आमी करून हाडटले आनी 2027 सरकार घडोवन हाडटले आनी गोंया खातीर जो बदल जाय खऱ्या प्रमाणान तो आमी हाडून दितले. देव बरें करूं.